puri zimmadari, as you can imagine, is on her, and she's been educating her children successfully, and she has a lot of dreams for her future as well. Zee again salutes Savita Bhai. We also have with us Miss Mumtaz Sheikh. She's the executive president of Koru Initialized Mahila Mandal Federation. They do a lot of work for domestic workers. They genuinely believe in the cause of their upliftment and support of all kinds. She has over 12 years of experience in to say a few words about how she feels on the occasion and what kind of work they do for domestic workers. मैं महिला मंडल फेडरेशन इस संगठन से हूँ। ये संगठन बस्तियों में रहने वाली दलित और मुस्लिम औरतों के साथ काम करता है। अलग अलग मुद्दे पे हम काम करते हैं, जैसे कि वायलेंस का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, और साथ ही में हम समानता की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं, हमारा संविधान ये कह रहा है कि हम सब इक्वल है, तो उसमें आने वाले हर औरत, हर आदमी ये इक्वल है, हम ये मानते हैं और इसको लेकर हम काम करते हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। जो बाई का मुद्दा अभी आया है, हम उन्हें बाई नहीं कहते हैं, हम उन्हें हमारे घर का हिस्सा कहते हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। अगर एक दिन वो ना आए तो हमें सबको पता है कि हमारी हालत क्या होती है, हम अलग अलग हमारे काम कर नहीं पाते। लेकिन उनके साथ होने वाले अलग अलग इश्यूज है जिसको लेके हमें काम करना पड़ता है, कि उनके साथ बहुत बार सेक्सुअल असल्ट हो जाते हैं। प्लीज जॉइन अस। No, that's okay. Do that. On the occasion, I'll just give you a mic. नमस्कार. मराठीत बोलू का हिंदीत आधी ते सांगा. बरं आधी मराठीत बोलते कारण कमलाबाई बनली आहे सिरियल मध्ये, तर आधी मराठीत बोलूया. किरदार आहे कमलाबाईचा, हु इज ऑब्वियसली एक बाई आहे, खूप कल्चर्ड, जसं दियानी सांगितलं तिच्यामध्ये खूप प्राइड आहे. तिला लाज वाटत नाही बोलायला की मी कमलाबाई घरकाम करते, पर वो उसका एक सपना है कि उसके जो बच्चे हैं वो घरकाम नहीं करेंगे, और वो उसी मेहनत से उसी सपने को साकार करने के लिए उसकी ये जर्नी है. तो जैसे आप लोगों ने सुना है, अजय जी ने कहा है, दिया टोनी ने कहा है कि एक मुट्ठी आसमान एक ऐसी औरत की कहानी है जो हमारे बीच है, और हम लोगों का घर जो चलता है वो उसकी वजह से चलता है. और अगर हम लोग ये मान के उनको वो इज्जत दे सके, आई थिंक वीव वन द बैटल. Ashish, we'd like to hear your thoughts and how it feels to be back on screen after so long. Oh, it's fabulous. I'm very happy. Really, really happy. एक तो मुझे दिया और टोनी बेहद पसंद है. I really love them a lot. Beginning से both of y'all equally. अभी नहीं शुरू करूँगा. लेकिन एक टाइम था जब मैं बनेगी अपनी बात की ऑडिशन के लिए गया था और रिजेक्ट हो गया था, और तब से it was my dream to work with them, and this was when I was starting off. और I told you, don't remember, but I told you this. लेकिन आस्ते आस्ते टाइम चलता गया और फिल्में हुई, and we had met at the party and we had simple discussion. Of course मैंने दबे हाथों से कहा था कि मैं रिजेक्ट हो गया था, लेकिन they were so kind and they said that we should have worked together etc. और तब 11 रुपए, as she said, she had given me, and I knew I wanted to work with them. अब जब टाइम आया, I am so happy that it's them. और as an actor, I'm a big fan of Amitabh Bachchan, and as a businessman, I'm a very big fan of Subhash Chandra Goyal for what he's done. I have a very huge regard for Zee. I feel Zee TV is the bridge from Doordarshan to satellite. All the channels, that's the one that's connected the two. Or I'm happy I'm working with you guys, Ajay. Very, very happy. और उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट जो एक इशू बेस्ड स्क्रिप्ट है, मैं वैसे फिल्मों में काफ़ी मल्टी स्टार कॉमेडीज करते रहता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन स्लॉटेड.
Of course, I'm not a very big actor, so not in the position कि मैं अपने scripts खुद बनाऊं और you know कुछ issue based subject को touch करूं. लेकिन यहाँ पर मुझे opportunity मिली है कि I become a part of something जिसमें something as sensitive as this, जिसके बारे में सब लोगों ने बहुत बोला है, लेकिन at least we can address some issue. Mom and Dad ने हमेशा से मुझे ऐसे बड़ा किया कि घर में जो काम करने वाली है उससे हम दीदी कहे, और we used to always call her दीदी, and she used to always tie me Rakhi, whoever was working, whatever the age. और it's really nice कि अब जब वो इंसान जो पीछे से टीवी देखने की कोशिश करता है, और कई बार कई घरों में वो उनका डिपार्टमेंट है भी नहीं, they're supposed to be in the kitchen, which is not right. सबको अपना leisurely time होना चाहिए, और also a subject which is so massy, we don't necessarily need to touch the pulse of the inside of a house by doing Saas Bahu, which is overdone, I feel. As someone who's coming into TV after so much time, मैंने बोला कि यार I want to do a commercial show, something which touches the nerves of the inside of a household, everybody, घर की कहानी, because that's what works with the masses. और इसमें they have picked up such a good subject, which is about the housekeeper and the house help. And yeah, here I am, and I'm happy. I'm really happy to be a part of this. Thank you. Thanks so much, Ashish. मन ज़्यादा के नहीं? So कैसे लग रहा है मैनस बताएं? मेरे को एक मुट्ठी आसमान में आके बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने शिल्पा मैम से बहुत कुछ सीखा है, और शिल्पा मैम के साथ मेरी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है. अभी आशीष जी के साथ मेरी शूटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं उनके साथ शूट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखूं. Thank you. Very nice, Mehnaz. We'd now like to call back on stage our channel spokesperson, Ajay Bhalwankar ji, and Tony Andhia Singh for the Q&A session, so that we can proceed with the Q&As. Aye, sir. Please one more chair. Just put up your hands and we'll get the mic for you. Shilpa ma'am, you had a glamorous image while you were in films. So why did you accept such a de-glam avatar in a tele show for your debut in television? You know, in 1990s, when movies were being made, it used to be called commercial cinema and parallel cinema. And when we used to do parallel cinema, they say, हाँ, आप D-glam अवतार में आ रही हैं, ये वो. लेकिन जब वो film लगती थी, तो बोलते, क्या acting की आपने? That was the only way we got recognized as actors. Today, fortunately, that thing has all changed. There is nothing like parallel cinema. It's just cinema. TV, films, there is no longer movies or TV or whatever it is. An actor is an actor, whether you do TV or films, it doesn't matter. Kamlabai, personally, a character requires me to be in the way I am. And it's brilliant to be coming back and performing as Kamlabai, which is going to be reaching every home, to be launched by Z, having DJs behind you, making sure that it's all done well. So for me, I think 13 years after, it's a great way to come. So, you know. Question to the producers is, your show has a kind of a Maharashtrian image. So do you feel that it will have a pan-India audience? Yeah, because today when you see a city like Bombay, you have all sorts of people, you know, living in a chawl. You have all sorts of house help. You know, in fact, other than Maharashtra, I mean, even in my house, I have people from every state. So the idea basically is that help is something that is universal. Every house has a different kind of help, but the essence and the basics is the same. So the idea is to reflect a city, not necessarily reflect on the Maharashtrian culture or, you know, any such. She happens to be living here, but her thought process and the way she raises her kids and family is actually, you know, very, very, very broad-minded. So I would say that this kind of woman who strives for equality is, and not so educated, is actually more pan-Indian than anybody else, you know. Shilpa, welcome back after 13 years. This is Jyoti Venkatesh. कसे आहात तुम्ही? एकदम मस्त आहे. I started my career with him 9th August 86, correct? आपण फिल्मालय स्टुडिओ मध्ये when I did my first Mohabrat, he was there. आठवण आहे. And of course, म्हणजे काय? आणि मी आता बघतच होती, पण मला बरोबर दिसत नव्हतं. But it's so good to see you here. Same here. The question is, in the past 13